Hello students, this video is for grade LKG, so let us start. In this video, we are having 3 different parts in which we will get to know about 3 different subjects. So the subjects are English, Maths and EVS. Let us start with our first subject, English. The question says, write the missing letters from A to Z. You can see alphabets are given over here. यहाँ पे alphabets written है and what we have to do is we have to write the missing letter. Okay, कुछ letter इसमें missing है तो हमें क्या करना है, इन्हीं missing letters को यहाँ पर write down करना है. Okay, we have to write these missing letters. Okay, we all know alphabet A to Z, letters A to Z. So हमें read करते हुए A से लेके Z तक पूरे सारे letters को complete करना है. A for apple. B for ball. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fingers. G for grapes. H for horse. I for ice cream. J for joker. K for kite. L for lion. M for monkey. N for nose. O for owl. P for parrot. Q for queen. R for rabbit. S for sun. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch. X for Xmas tree. Y for yacht. Z for zebra. So we have done the missing letters. Okay, हमने सारे missing letters को A to Z तक complete कर लिया. Now let's move to our next section of the sheet, which is maths. Write whether the animals are facing left or right. In this we have to write left or right. या तो हमें left लिखना है या right लिखना है, depending on the animals facing. ओके, यहाँ पे आप एनिमल्स को देख सकते हैं. एनिमल्स की फेसिंग के बेस्ड पे एनिमल किस तरह फेस किए हैं उस बेस पे आपको यहाँ पर राइट या लेफ्ट राइट करना है. अगर एनिमल्स ने राइट साइड फेस किया है तो आप राइट लिखेंगे, RIGHT राइट. अगर एनिमल्स ने लेफ्ट साइड फेस किया है तो आप लिखेंगे लेफ्ट, LEFT लेफ्ट. अंडरस्टूड? ओके, सो आप कैसे पहचानेंगे कि राइट साइड कौन सा है और लेफ्ट साइड कौन सा है? नॉर्मली
हम हमेशा राइट हैंड से ही अपना वर्क करते हैं, रिटर्न वर्क जो हम करते हैं वो हम नॉर्मली राइट हैंड से ही करते हैं, बट इन अ फ्यू केसेस, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो कुछ बच्चे होते हैं वो लेफ्ट हैंड से वर्क करते हैं, अंडरस्टूड, बट नॉर्मली ऑलमोस्ट एवरीवन डू द वर्क विद देयर राइट हैंड ओनली. So by that you can guess out which is right and which is left. Now see the honeybee. Honeybee किस तरफ फेस की हुई है? Honeybee is facing towards right. R I G H T, right. नेक्स्ट इज द बर्ड. बर्ड इज फेसिंग टूवर्ड्स विच साइड? कौन साइड पे बर्ड ने फेस किया है? द बर्ड्स फेस इज अपोजिट. ओके, ऑपोजिट टू हनी बी. हनी बी का ऑपोजिट है. इट मीन्स द बर्ड इज फेसिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड. L E F T, left. So in this way you will write if the animal are facing left or right. Okay, animal किस तरफ फेस किए हैं उसी बेसिस पे आप यहाँ पर लेफ्ट या फिर राइट करेंगे. अंडरस्टूड? या. Let us revise counting from 1 to 50. Everyone speak with me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50. We have read counting from 1 to 50. Now let's move to our last section of the sheet, which is EVS, Environmental Studies. Take the flower and cross the vegetable. Okay,
you all can recognize which is flower and which is vegetable. आप सब recognize कर सकते हैं कि कौन सा picture flower है और कौन सा vegetable है. तो जो भी pictures flowers के हैं उनको टिक करना है. ओके सारे फ्लावर्स पे आप टिक करेंगे. ओके बॉक्स बना है, बॉक्स में टिक करेंगे और जो वेजिटेबल्स हैं उनमें क्रॉस करेंगे. व्हाट यू विल डू इज यू विल टिक flowers and cross vegetables. Understood? Yeah. So many flowers are given over here, like dahlia, mogra, champa, rose, sunflower, lotus, and so many are also there, like pansy, hibiscus. Okay, so many flowers are there, so many vegetables are there, like pumpkin, potato, tomato, brinjal, ladyfinger, onion, cabbage, cauliflower. Understood? So you have to do is you have to take the flowers and cross the vegetable, and also you will learn all these flowers name. Okay, इन flowers के name को भी आप learn कर लेंगे. 5 flowers given है. Okay, 5 flowers. You will learn these names also. Okay. Yeah. I hope you all have understood this sheet very well. But if you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.